Hello everyone, welcome back to my channel. Today we have a topic for hybridization scheme, and that is for SF6 molecule, means octahedral molecule. So before going into detail, I'll let you know what is hybridization. So from class 11th we are studying that hybridization is a phenomenon of intermixing of atomic orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies to form equivalent orbitals, or we can say new orbitals having same energy, shape, size, and those are called equivalent orbitals. And that new type of orbitals are known as hybrid orbital. Now, if you are in BSc, then you will write that it is the linear combination of atomic orbitals belonging to the same atom. For example, if we have S and P orbital, two orbitals are there. So when they combine linearly, we will get two wave functions. Yes, one more thing. If n atomic orbitals mix together, we will get n hybrid orbitals. See, the number of atomic orbitals which are mixing together lead to the number of atomic orbitals formed, new hybrid orbitals formed. They are not less than or more than that. They are equal to the number of atomic orbitals which are mixing together. So, if we have S and P orbital, then psi1 is A1S plus B1P, A2S, B1P, B2P. That means if we have two atomic orbitals, we will get two new orbitals, means two hybrid orbitals. That means first is linear combination of atomic orbital belonging to the same atom, that is called hybridization. Second, number of hybrid orbitals is equal to number of hybrid orbitals is equal to number of atomic orbitals combining linearly. For example, if we combine S and P, one S, one P, then we will get two hybrid orbitals. And so is the case with 3, 4, 5, 6, so on. Third point is hybrid orbitals are mutually orthogonal and at the same time they are equivalent. That means by symmetry operation we can transform one hybrid orbital into another hybrid orbital. So at the same time mutually orthogonal and normalized as well, right? Orthonormal. Hybrid orbitals are orthonormal. They are normalized, they are orthogonal, and at the same time they are equivalent. So these are the few points which you keep in mind. For all the hybrid orbitals, these things are common. Okay, now come to the main question, that is hybrid orbitals of SF6. So look at this molecule. There are 6 bond pairs. Alright, means sulfur can form 6 sigma bonds with chlorine atoms. That means sulfur should have 6 hybrid orbitals. Means 6 hybrid orbitals of sulfur overlap with 2p, one of the 2p orbital of chlorine to form 6 sigma bonds. And 6 orbitals or 6 bonds are lying in an
octahedral shape. Means sulfur has 6 bond pairs, 6 SF bonds, and arranged in octahedral fashion. They are arranged in octahedral fashion. Means there are 6 sigma bonds, and these bonds are lying along the axis. In octahedral arrangement, these two bonds, if they are taken on x-axis, these two bonds are on y-axis, and these two bonds are on z-axis. Means 6 bonds are lying in along 3 Cartesian coordinates. 6 bonds lying in 3 Cartesian coordinates. If 6 hybrid orbitals are there with sulfur, so sulfur should involve its 6 atomic orbitals, and obviously those atomic orbitals which are lying on the axis. Okay, so s orbital is always there because that is spherically symmetrical. Then you have px, py, pz, px, py, pz. They are on x-axis, y-axis, and z-axis. Lobes are on x-axis, y-axis, and z-axis. And then p orbitals, because in p there is no question at all because lobes are on the axis. So all the 3 p orbitals, they can be involved. But when we talk about d orbitals, shapes of d orbitals. So now if we talk about d orbitals, this dxy, dyz, dzx, they are lying on, their lobes are lying in between the axis. But dz square, dx square minus y square, lobes are on the axis. Lobes are on the axis. So obviously, which d orbitals are involved in hybridization? So it is dx square minus y square and dz square. Why? Their lobes are lying on the axis. So now we have s orbital, px, py, pz, dx square minus y square and dz square. These are the 6 atomic orbitals of sulfur which are involved in hybridization to form 6 hybrid orbitals, and they are combined linearly. So how many hybrid orbitals are formed? See, if n atomic orbitals combine, we will get n hybrid orbitals. If 6 hybrid orbitals are combining, we will get 6 hybrid orbitals. Psi I, where I is equal to 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Psi I is equal to AIS, BI, PX, PI, PY, DI, PZ, EI, dx square minus y square plus FI, dz square. This is the case. Okay, you can take these coefficients, maybe something else, but A, B, C, D, E, F, it's okay to continue with this. Okay, so A1, B1, C1, D1, E1, F1, depending upon their contributions, we will get these values of these coefficients. Okay, now come to the next part. First, let us think the contribution of s. S orbital is spherically symmetrical. So when we have SF6, s orbital is involved in all the 6
orbitals and it is involved equally. For each hybrid orbital, contribution is 1/6 because there are 6 hybrid orbitals and s orbital is equal hota only one s orbital and that is involved in all the 6. If in all the 6 one orbital is involved, so a1 square or a2 square or a3 square, a4, a5, a6 square, that is equal to 1/6. I hope you understood. Now it means a1, a2, a3, a4, a5, a6 equal to 1/√6. So s orbital का contribution in all the 6 we get. Now one more orbital is involved in all the 6 hybrid orbitals and that is the z square. Now come to its shape. D orbital is like this, right? And write its sign of the wave function. You know, z square, z into z. So in the plus direction it is plus, in the negative direction even then it is plus because it is dz square. Okay, so if we talk about the shape dz square, there is, it has lobes on z axis and ring of electron, it has 2 lobes, right, on z axis and ring of electron density in xy plane. So see, it is different from s orbital. You know, s orbital is spherically symmetrical. So that's why its contribution is equal in all the 6 hybrid orbitals. But in dz square, we have 2 lobes on the z axis and ring of electron density in the xy plane. So it has actually 3 parts. Out of 3 parts, 2 parts on the z axis, one on the positive z, other on the negative z, and one part is in the xy plane. It has 3 parts. One part on plus z axis, second part on minus z axis, the plus z minus z axis, and third part in the xy plane. That means in all the 3 it is 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 on positive z axis, 1/3 on negative z axis, and 1/3 in the xy plane. Now come to the shape. When we talk about shape, on the z axis, on the positive z axis, there is one hybrid orbital. On the negative z axis, there is again one hybrid orbital. 2 bonds are on the z axis. This is alpha atom, and let us say these are the hybrid orbitals. You know, they are like this, right? Bigger part and smaller part. And one more thing, why hybrid orbitals are required? Because hybrid orbitals are more directional, they provide more strength, okay, and maximum overlap. That's why hybrid orbitals are far better than the pure atomic orbital. That's why hybridization is required, or hybridization is done by the atoms. It is completely theoretical concept. There is no experimental evidence like that, but mathematically we can prove it. Okay, now you know, this is on the plus z axis, this is on the
minus z axis. And let us take it as psi 1 and this is psi 2. So 1/3 contribution to psi 1 and psi 2, that is 1/3. So it is actually coefficient is 1/√3 for psi 1 and psi 2. Contribution of z square dz square is 1/√3, 1/√3 for two hybrid orbitals which are lying on the z axis. Now what about x and y axis? So there are total 4 hybrid orbitals. So 1/3 is divided in 4 orbitals. If 1/3 is divided among 4, that means 1/12. 1/12 contribution to each. So that means for psi 3, 4, 5 and 6, coefficient of dz square is 1/√12. For psi 1 and psi 2, it is 1/√3. And see, for dz square, if we draw like this, then 1 dz square, sign of the wave function is positive on both sides because it is dz square. So that's why contribution is positive among all for dz square. So keep in mind, for psi 1 and psi 2, which are lying on the z axis, their contribution is 1/√3. So contribution is 1/3. So coefficient is 1/√3. Okay, but for all the 4 orbitals which are on the x and y axis, and total are 4, so that 1/3 part of dz square is divided in all the 4. So 1/3 or 1/4 belongs to one hybrid orbital. So that is 1/12. Its coefficient is 1/√12 with positive sign. तो दो अभी तक क्लियर कर लिया हमने कि जो psi 1 है और psi 2 है, उसमें s का कंट्रीब्यूशन तो चाहे कोई भी हो, वो 1/√6 ही रहेगा. एंड फॉर dz स्क्वायर in psi 1 and psi 2, it is 1/√3 and 1/√3. Now on the z axis, p ऑर्बिटल कौन सा होगा? सबको पता है z. तो pz is on the z axis only. ये दो लोब्स हैं, एक लोब का साइन प्लस है, दूसरे लोब का साइन माइनस है. तो इसका मतलब एक साइड प्लस हाफ एक ऑर्बिटल और दो ऑर्बिटल में डिवाइड होगा, तो 1/2 कंट्रीब्यूशन हो जाएगा. दैट मींस इट्स कोएफिशिएंट इज 1/√2. और साइन ऑफ द वेव फंक्शन देख लो, तो एक प्लस एक हो जाएगा 1/√2 pz प्लस, और दूसरा हो जाएगा 1/√2 pz. तो ये psi 1 और psi 2 क्लियर हो गए, क्योंकि z एक्सिस पे एक s होगा जो कि स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, dz स्क्वायर होगा जिसके दो लोब z एक्सिस पे हैं, और एक pz होगा. बाकी dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, lobes are on the x and y axis, there is no contribution from that, जीरो कंट्रीब्यूशन होगा उनका. px py भी x और y एक्सिस पे हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन भी नहीं होगा. दैट्स इट. तो psi 1 और psi 2 दो हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्कीम हमने ड्रॉ कर दी है. तो बात करते हैं अब psi 3 एंड psi 4 की. इन दोनों को हमने psi 1 और psi 2 ले लिया था. अब मैं x एक्सिस को लेता हूं, psi 3 और psi 4. psi 3 एंड psi 4 जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं x एक्सिस के ऊपर, उनको ले लिया मैंने. तो x एक्सिस की बात करेंगे तो कौन कौन से ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन होगा? एक तो s,
का हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, 1/√6, 1/√6, और dz स्क्वायर, dz स्क्वायर का कंट्रीब्यूशन भी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, कितना था, 1/√12 के dz स्क्वायर के हमने बोला था 3 पार्ट है, एक प्लस z में, एक माइनस z में, इसलिए 2 के लिए हमने कंट्रीब्यूशन लिया था 1/√3, 1/√3, और जो एक पार्ट है वो xy प्लेन में है, इसका 1/3 का जो है वो चारों में डिवाइड होगा, इसलिए 1/12 आया था, और कोएफिशिएंट आ गया 1/√12, और विद प्लस साइन, साइन समझिए ना, साइन ऑफ वेव फंक्शन की बात करी मैंने। अब बात करते हैं कि और एक्स एक्सिस के ऊपर ये दो तो हैं ही, और कौन से हैं, px भी होगा, ऑब्वियसली लोब्स आर ऑन द एक्स एक्सिस इन px, इसको जैसा है वैसा ही बनाता हूँ, येलो प्लस माइनस, इसके दो साइन है, तो इसका मतलब एक साइड प्लस आएगा तो दूसरी साइड, दूसरे में माइनस आएगा, और एक ही ऑर्बिटल है और कितने में डिवाइड हो रहा है, दो में, एक ऑर्बिटल और दो बॉन्ड्स में डिवाइड हो रहा है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल में उसका कंट्रीब्यूशन जा रहा है, तो एक के लिए कितना होगा 1/2, कोएफिशिएंट आएगा 1/√2, 1/√2, डन। अब आ जाओ, और कौन सा होगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाता हूं मैं, ऐसे बनाते हैं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब इनके साइन देखो वेव फंक्शन की, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर मीन्स ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये पॉजिटिव साइड भी प्लस x की साइड भी प्लस होगा, माइनस x साइड भी प्लस ही होगा, दैट मीन्स दोनों का ही कंट्रीब्यूशन प्लस आएगा। जब y की टर्म आएगी माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों में ही dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो माइनस होगा, है ना। तो अब इसका कोएफिशिएंट, ये एक ऑर्बिटल है और कितनों में डिवाइड हो रहा है, चार में, देखो एक्स एक्सिस पे तो जाएंगे इनके लोब्स, और वाई एक्सिस के ऊपर भी जाएंगे, इसका मतलब चार में डिवाइड होगा एक ही, तो कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, 1/4 का हाफ था, तो 1/4 मतलब कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1/√4 मींस 1/2, तो 1/2 ऑफ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1/2 ऑफ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो गए psi3 एंड psi4। तो चार ऑर्बिटल अभी तक हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्कीम ड्रॉ कर ली, अब बचे दो, अब दो कौन से बचे, psi5 एंड psi6, देखो ये था psi1, ये था psi2 जो z एक्सिस पे थे, और ये था psi3 और ये था psi4 जो कि x एक्सिस पे थे। अब आओ y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे जो है वो ले लिए हमने psi5 एंड psi6। अब कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, देखो psi5 psi6 से s तो होगा ही, dz स्क्वायर भी होगा, का कंट्रीब्यूशन कितना था 1/√6 का, कितना था 1/√12, अब कौन से बचे py, तो py की बात करेंगे तो py जो है लाइक दिस, पॉजिटिव साइड प्लस और नेगेटिव साइड माइनस कंट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब एक साइड प्लस इसमें माइनस, और कितना होगा हर एक में, एक ऑर्बिटल दो में डिवाइड हो रहा है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल में जा रहा है ना उसका कंट्रीब्यूशन, तो 1/2 का मतलब कोएफिशिएंट हो जाएगा 1/√2, 1/√2 px, सॉरी py, अब बचा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है x एक्सिस पे कितना था प्लस प्लस, बट y एक्सिस पे चाहे प्लस y एक्सिस हो या माइनस, दोनों में ही माइनस रहेगा, कि माइनस वाई स्क्वायर होता है,
इसलिए इसका भी माइनस कंट्रीब्यूशन, इसका भी माइनस। और सेम वही केस, एक ऑर्बिटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो कंट्रीब्यूशन इज 1/4 और वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1/2 डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो दैट्स इट। ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने किए। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन स्कीम फॉर SF6। मैं एक बार लिख देता हूं पूरे। psi1 psi2 psi3 psi4 psi5 एंड psi6। पहले s का कंट्रीब्यूशन इन ऑल इट इज 1/√6 कि वो s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल था और सब में उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा इक्वल। फिर आपने किया dz² और dz² के कितने पार्ट थे 3। 3 में से एक 1/3 पार्ट जो है वो z एक्सिस पे, दूसरा 1/3 पार्ट भी z एक्सिस पे और बाकी जो बचा 1/3 पार्ट वो 4 में xy प्लेन में, लिए 1/√12। और पॉजिटिव साइन कैसे याद रखना है उसके वेव फंक्शन के साइन से। फिर आ जाओ, ये दो ऑर्बिटल जो हैं पहले दे आर ऑन द z एक्सिस, अगले जो दो हैं दे आर ऑन x एक्सिस, अगले जो दो हैं दे आर ऑन y एक्सिस। तो z एक्सिस पे dz² के अलावा कौन सा था pz, और pz दो में था, एक में pz का कंट्रीब्यूशन 1/√2 और दूसरे में उसका माइनस हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइन। फिर x एक्सिस पे px होगा, एक में प्लस px दूसरे में माइनस px, एक px है और दो में डिवाइड हो रहा था तो 1/2 और ऑप्शन आ जाएगा 1/√2। इधर आ जाओ py तो 1/√2 py 1/√2 py। फिर आ जाओ dx² माइनस वाई स्क्वेयर, तो वो जो dx² माइनस वाई स्क्वेयर है वो z एक्सिस वालों पे नहीं होगा और x और y एक्सिस पे होगा। और कितना होगा 1/4 मींस 1/2, x एक्सिस पे दोनों प्लस, फिर dx² है और फिर माइनस वाई स्क्वेयर है तो 1/2 dx² माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 1/2 dx² माइनस वाई स्क्वेयर और ये माइनस 1/2 dx² माइनस वाई स्क्वेयर minus 1/2 dx² minus y square. That's it. Now, next part is let us prove कि they are normalized. तो ये prove कैसे करोगे आप कि जो psi1² d tau है that should be equal to 1. That is normalization condition. और कोई भी दो ले लो, चाहे psi1 psi2 लो, चाहे आप psi1 psi3 लो, चाहे आप psi1 psi4 so on, जितने भी मीन्स psi I psi j d tau I not equal to j that should be equal to 0 और psi I square d tau that should be equal to 1. This is normalization condition and this is orthogonality condition. तो किसी भी एक का ले लेते हैं, psi1² d tau equal to 1, ठीक है ना। तो अगर मैं लेता हूं psi1 क्या था 1/√6 s, ठीक है, प्लस 1/√3 dz² प्लस 1/√2 pz होल स्क्वायर
d tau, that should be equal to 1. That I should prove. So let us say if this is equal to x, and I should prove by this that x should be equal to 1. Okay, चलो करते हैं. इंटीग्रेशन 1 by रूट 6 s का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, फिर s dz स्क्वायर, s dz square pz, like that all the combinations are formed. But s को किसी भी और के साथ करेंगे तो 0 आएगा, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस, और s का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा ना. तो हम इसी का स्क्वायर लेते हैं. पहले देखो 1 by 6 s होल स्क्वायर डी टाउ प्लस इंटीग्रेशन 1 by अंडर रूट 3 dz स्क्वायर होल स्क्वायर डी टाउ प्लस 1 by रूट 2 pz होल स्क्वायर डी टाउ, दैट शुड बी इक्वल टू 1. एक्चुअली हम x ले रहे हैं क्योंकि हमें प्रूव करना है कि x शुड बी इक्वल टू 1. ओके, तो अब आ जाओ आगे. ओके, सो 1 by 6 कॉमन, क्योंकि 1/6 का स्क्वायर, और s स्क्वायर डी टाउ प्लस 1 by 3 dz स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 by 2 pz, that is equal to x. So it is 1 by 6 because it comes out to be 1 square है ना, pz square theta. 1 by 6 plus 1 by 3 plus 1 by 2 equal to x. That implies x equal to 6, 1 plus 2 plus 3. That is 1. X is 1. So we have proved that psi 1 is normalized. Accordingly, you can prove anything, any other. It means ai square b I square c I square d I square e I square f I square, that should be equal to 1, and I is equal to 1 2 3 4 5 6. So that proves that they are normalized. Psi 1, there is contribution from s dz square and pz. From all other it is 0. Take it 0. So if you do the square of the coefficients and add them, that should come out to be 1. Now come to the second part. Second part is any two, psi 1 psi 2 d tau, that should be equal to 0. That should be equal to 0. So see, you have 1 by root 6 s plus 1 by root 3 dz square plus 1 by root 2 pz into 1 by root 6 s plus 1 by root 3 dz square minus 1 by root 2 pz d tau. Take it as y. So we should prove that y is 0. How do we go? See, when s combined with s square d tau, that is 1. But if s combined with any other, that is 0. Orthogonality condition. Dz square, same is the case with dz square, same is the case with pz. So in first 1 by under root 6s, 1 by under root 6s, so it comes out to be 1 by 6 s square d tau plus 1 by under root 3, 1 by under root 3, 1 by 3 dz square d tau plus 1 by under root 2 minus 1 by under root 2 minus 1 by 2 pz square d tau equal to y. This is equal to 1 1 1. So y is equal to 1 by 6 plus 1 by 3 minus 1 by 2. 6 is LCM. 1 plus 2 minus 3. That means 3 minus 3 by 6 means 0 by 6. 0. So y comes out to be 0. So we have proved that
psi1 and psi2 are orthogonal to each other. So accordingly, you can prove anything, like it means AI AJ plus BI BJ plus CI CJ DI DJ EI EJ FI FJ, that should be equal to 0 and I should not be equal to j. That's it. So if we prove this is the condition of orthogonality, and if we have AI square BI square CI square DI square EI square FI square, that is equal to 1, that proves they are normalized. That's all. So this is the hybridization scheme for SF6. Thank you so much for watching this video. Do like video and subscribe to my channel. Happy learning. Bless you. Thank you so much.